Very good morning to all of you. Myself Arshita Tripathi and I'm here to teach the first chapter of an accountancy book, Meaning and Objectives of Accounting. So, this is the second part of your chapter. In the first part, we have studied what is the need of accounting and what are the characteristics of accounting. And now we will study the objectives of accounting. So, the first objective of the accounting is to keep the systematic record of the transactions. So, main objective is of recording the ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली मीन्स जब जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसे डेट वाइज पीरियोडिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करना जस्ट टू अवॉइड द फ्रॉड्स एंड द ओमिशंस बिकॉज अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो डेली सो दिस इज़ योर माइंड, दिस इज़ नॉट योर कंप्यूटर कि आपको अगर एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपसे पूछा जाए कि इन अ होल ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर आपसे पूछा जाए कि इन अ होल ईयर हाउ मेनी ट्रांजेक्शन यू हैव डन, हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल्स you have done, or how much you have sold, how much you have purchased, or how much you have invested in the production and all. So your mind is not a computer that you will remember each and every minor details. So for that, to overcome with all these issues, to avoid the frauds and the omissions, you record the transactions systematically in the accounts book. And the second objective is to calculate the profit or loss. Why we do the business? We do the business just to earn the profit. Yes, there are firms who do the business or who work not for the profit motive, but basically the motive behind the business is just to earn the profit. So how do we know how much profit we have earned or how much we have invested and all? So accounting help us to know the profit and loss of a firm, and we can know this by preparing the accounts. For this we prepare trading and profit and loss account. So trading account is prepared to know the gross profit. What is gross profit? Gross profit is that we earned एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स सामान को बनाते समय हमने कितना खर्चा किया है और कितना हमने इसमें उस वहाँ पे हमें कितनी इनकम हुई है उसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट. दिस यू विल स्टडी लेटर ऑन इन डिटेल. This is I guess the last chapter in your book, so we will study this in detail. You just have to know for the time being is that trading account is prepared just to know the gross profit, and we prepare profit and loss account to know the net profit. Net profit, that is the profit that remain with us after paying off all the expenses and all. दैट इज़ विद अस. सब कुछ पे ऑफ करने के बाद हमारे पास जो बचता है दैट इज़ द नेट प्रॉफिट. एंड वी नो दिस. हाउ वी कैन नो दिस? वी नो दिस बाय preparing the accounts. And the third objective is to know the exact reason leading to the net profit or the net loss. Means we prepare accounts to know what is the reason behind why we are earning profit. Means at the end of the year if you are earning profit, so you want to know the reason why we are earning profit so that you can continue in the subsequent years. मीन्स अगर साल के अंत में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये जानना चाहेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट हो रहा है ताकि आप आगे भी इस प्रॉफिट को कंटिन्यू कर सकें. एंड इफ़ यू आर हैविंग लॉस देन ऑल्सो यू वांट टू नो द रीज़न व्हाई यू आर हैविंग लॉस सो दैट यू कैन हैव सम रेमेडीज टू रिमूव दैट थिंग्स so that these loss can be converted into the profit. So to know the reason behind the profit and the loss, we prepare the accounts. And the next objective is to ascertain the financial position of the business. What do you understand what the financial position is? That how
how much amount of asset we have and what we have to pay off, and what is a liability. Liability is something what we owe to others, हम जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें जो दूसरों को पे ऑफ करना है. ये सारे टर्म्स अभी हम आगे पढ़ेंगे इन द सेकेंड चैप्टर. यू विल नो द टर्मिनोलॉजी सम रिलेटेड टू द अकाउंट्स, बट फॉर अ टाइम बीइंग know this that these liability is what. liability वो होती है जो हमें पे करनी होती है दूसरों को, जो हमारा दायित्व होता है, जिसके लिए हम बाउंड है, that we will have to pay that. and asset is something that is our own, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारा होता है. सो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? बाय कैलकुलेटिंग द एसेट and the liability. हमारी asset क्या है, what is a property, how much we have with ourselves, and what is a liability, हमें कितना pay off करना है. So to know the asset and liability, we will have to prepare the accounts. And the next objective is to prevent and detect the error and frauds. So we prepare accounts just to डिटेक्ट द एरर्स, क्या गलतियाँ हो रही हैं हमसे और क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं. To know all this, we prepare the accounts, because in the accounts book what we do is we record the transaction in a chronological order, date wise and all. So with the help of accounts we can easily know what are our faults and what are the frauds, so that we can prevent ourselves by doing the mistakes, and this will help us in earning more and more profit. And the next and the most important objective of preparing accounts is to provide information to the interested parties. Why do we prepare accounts? We prepare accounts to provide the information to the interested parties, means to the people who are interested in our business. they want to know the financial position of our business, कि हमारा financial position क्या है, what are our assets and liabilities, is investment by them in our business is profitable or not. So how they can know all this? They can know all this by seeing the accounts. So now we have terms that are synonyms to each other: bookkeeping, accounting and the accountancy. ये सारे terms एक दूसरे के synonyms है, but there is a minor difference between all these three. So let's understand the terms separately. So the first we will study is bookkeeping. Bookkeeping record the monetary aspects of the financial and commercial transactions. Means जो हमारे financial या commercial transactions होते हैं, in bookkeeping we only record the transactions that are related to the monetary terms. So what we do in the bookkeeping is, firstly we will identify the transaction. पहले जो फाइनेंशियल या कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, वी विल आइडेंटिफाई दैट what are the transactions that are related to the monetary terms, पैसे से related या money से related क्या transactions है, and then we will classify it. हम अलग कर लेंगे monetary transactions and non-monetary transactions को, and then we will record those monetary transactions in the book of original entry that we also called as journal. ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था. सो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, फर्स्टली वी विल क्लासीफाई इट इन द मॉनेटरी एंड द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. व्हाट आर द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते. सपोज अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई या हमने किसी को अपॉइंट किया, सो दीज आर द ट्रांजेक्शन्स. ये ट्रांजेक्शन्स ही हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हमारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वी आर नॉट अनेबल टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाई करते हैं एंड देन वी विल रिकॉर्ड इन द जर्नल और द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. After that we will classify it into the ledger. जर्नल में क्या बताया था हमने कि सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह लिख लेते हैं, कि अगर हमने एक दिन में कोई सामान खरीदा है, बेचा है, उधार में दिया है, या हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ, हम एक जगह एक पन्ने पे लिख लेंगे.
बट इन द लेजर व्हाट वी डू कि हम हर के लिए अलग अलग बुक बना के रखते हैं. सो अगर हमने सेल किया है तो हम सेल बुक खोल के लिखेंगे, अगर हमने परचेज़ किया है तो हम परचेज़ बुक खोल के वहाँ पर लिखेंगे, अगर हमने कहीं कैपिटल लगाया है तो हम कैपिटल बुक खोल कर वहाँ पर लिखेंगे. सो इन बुक कीपिंग व्हाट वी डू इज़, पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी में, एंड देन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लासिफाई इट इनटू द लेजर अकाउंट्स. And this bookkeeping can be done by the people having the less knowledge of accounting. Means ज़रूरी नहीं है कि ये bookkeeping करने के लिए आपके पास accounts की professional knowledge होनी चाहिए. Any people can do this. Now we have the term accounting. So accounting starts where the bookkeeping ends. So bookkeeping कहाँ end होती है? Bookkeeping end होती है कि हमने ledger accounts बना लिया. So accounting starts from here. After preparing the ledger account, what we do, I have told you that after preparing the ledger account, we have studied in the accounting cycle कि ledger के बाद हम बनाएंगे trading and trial balance बनाते हैं, then we will prepare the trading and profit and loss account and the balance sheet. So here the accounting starts. Ledger तक हमारे bookkeeping थी, and after that the accounting starts. And what happened that after preparing trading and profit and loss account and the balance sheet, we will interpret the results and we will communicate to the others. So these three steps come under the accounting. What are these three steps? That we will prepare the trading and profit and loss account, we will interpret the results, and we will communicate it with the interested parties. Now the question arises, what is accountancy? So accountancy is something that is having the professional knowledge about the accounting, knowing about the principles and the techniques that we will apply in recording the accounts. It will tell us how to record the transactions, how to summarize and all. So accountancy refer to the entire body of theory and the process of accounting. This is the definition given by the Kohler. What does the Kohler say? That accountancy refer to the all the process and theory of the accounting. So that's all for this session. Hope you have understood the term bookkeeping, accounting and the accountancy. Late in the next session we will have the discussion of difference between all these three. Hope you have understood. Stay home, be safe, and keep on revising, keep on practicing. Thank you.